Students, now we'll talk about the reflection by mirror by the Huygens principle. Now if we read this statement related with that diagram, so by the time the incident wavefront reaches from the point B to O3, this is this is the incident wavefront and I'm moving towards this surface. So if this ray is coming over here and if we have considered this AB, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पॉइंट इसमें सबसे पहले कौन सा टच करेगा, दिस पॉइंट A will touch, this O1 will be touched फर्स्टली, है ना, फिर उसके बाद O2 टच होगा, फिर उसके बाद A3 जैसे जैसे जब तक ये B पॉइंट इस O3 को टच करेगा तब तक क्या हो चुका होगा कि O1 पॉइंट भी टच हो चुका होगा और O2 पॉइंट भी टच हो चुका होगा इस वेव के कारण, वेव फ्रंट के कारण। तो यहाँ से हमको एक चीज पहले से पता है हाइजेंस प्रिंसिपल के क्या होता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स इटसेल्फ, है ना। तो आपका सेकेंडरी वेवलेट्स हो तो उसमें भी हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। तो दिस इज व्हाई दिस सेकेंडरी वेवलेट्स विल बी जनरेटेड, है ना। सबसे पहले इससे जनरेट होगा तो ज्यादा दूर तक फैलेगा, ज्यादा हाइट तक, h हाइट, फिर उसके बाद O2 से जनरेट होगा k हाइट एंड देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ द, है ना, टचिंग्स। So this O1, O2, O3, O4, O5, there can be a large number of the points which will be touched, infinite number of the points. All right. So here we have just only considered these 3 points O1, O2, O3 to understand this concept. So secondary wavelets from the O1 reach H1. देखिए O1 से H1 तक पहुंच चुका होगा, O2 से K तक पहुंच चुका होगा यदि आपका जब तक ये पॉइंट B O3 को टच करे। क्लियर बात। तो द सरफेस टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करें इससे, इस जो सर्कल्स हमको मिल रहे हैं इस टाइप से जो वेवफ्रंट्स मिल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स मिल रहे हैं, उससे यदि उसके सरफेस से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स मिलेंगे। क्लियर दोस्तों। इसको अभी हम इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को कैसे फॉलो करता है इसको ज्योमेट्रिकल वे में हमको समझेंगे इसको। तो जस्ट इट्स अ थ्योरेटिकल पिक्चर ऑफ दिस रिफ्लेक्शन बाय द मिरर बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। After this we'll talk about the geometrical interpretation. Students, now we'll talk about the geometrical interpretation of the reflection in the wave optics. So if we have this incident wavefront coming to the surface and it is a reflected wavefront as I talked about. Now if we consider, if we assign the angles to it, so if we have drawn normal to here, this will be I. So and this must also, क्योंकि यहाँ पे पहले सबसे पहले टच होगा फिर उसके बाद यहाँ टच होगा फिर इस तरीके से, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्मेशन होता है यहाँ पे I and this is angle of reflection. So now this इस ट्रायंगल को आप देखिए, क्योंकि ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल होता है उसका 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम यदि 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, that will should also be 90 degree. If it is I, so what should be this? This should be 90 minus I, ठीक है। और यदि यहाँ पे एंगल R है आपका, यदि एंगल R है और इस राइट ट्रायंगल को देखा जाए AFC को, तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे R, तो यहाँ क्या बनेगा 90 minus R, this will be 90 minus R. Clear? So very important concept. और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है that is taken to be v delta t. V is the speed of light, speed of the wave. So if we have considered this triangle ABC, first you have to consider this triangle ABC. So sine I would be perpendicular upon hypotenuse, so the perpendicular upon this, है ना, 90 यहाँ पे एंगल के सामने जो होता है वो hypotenuse होता है। So BC upon AC, very important concept. So V delta T divided by this AC, है ना। ट्रायंगल AFC को यदि अब देखा जाए, AFC को देखिए, AFC को, so sin R equals to AF divided by AC. This AF divided by this AC, ठीक है। So this is V delta T divided by AC, very important concept, ठीक है। Now if you compare these two values, this equation 1 and this equation 2, what will happen? The sin I is equals to sin R. Sin I is equals to sin R, so that is equals to I equals to R. Very important. ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये होल्ड कर रहा है, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेव ऑप्टिक्स जो होता है हमको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इट ऑल्सो टेल यू सम मोर इंपॉर्टेंट फिनोमेना लाइक पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड सो मेनी ऑफ द थिंग्स। So very important concept. Now if we see that how it follows the laws of reflections as well.
in the wave optics, and the refraction at the interface between the two transparent medias. So if we have this transparent media, if this is the interface between the two dielectrics, here it has different refractive index, here it has different refractive index. So if light is coming from this is the incident wavefront to this surface, then definitely you know very well this V1 delta T, because the refractive index is different, N1 refractive index and this be N2 refractive index. So it will be V1, यहाँ पे स्पीड जो होगी लाइट की वो डिफरेंट होगी वेव की, यहाँ पे स्पीड जो होगी वेव की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यह V1 डेल्टा T हो जाएगा और किसी डेल्टा T इंटरवल पे, और इधर क्या हो जाएगा V2 डेल्टा T. So now if you have got this picture and you know the refraction phenomena very well, that and we know the refraction phenomena very well, that when any light is traveling from the denser medium to rare medium, it moves away from the normal, and when any ray is coming from rare medium to the denser medium, it bends towards the normal. So that is the fact, and the same phenomena happens over here in the wave optics as well. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब जैसे जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इससे सबसे पहले आपको सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी, फिर इसके बाद इस कहीं इस पॉइंट से वेवलेट्स जनरेट होंगी, ठीक है, इस तरीके से, फिर इससे जनरेट होगी। तो इधर से आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो समथिंग टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, है ना, दिस इज द V1 delta T and here it is V2 delta. Here velocity will be different, here velocity will be different, because they have the different dielectric constants values. They have different refractive indexes. Very important concept. I will tell you geometrical interpretation of this as well. Students, now we will talk about this wavefront. That is the geometrical interpretation for the refraction for the waves. So now wavefront in the second medium is the tangent to all the secondary values. So if you have this wavefront coming to this surface and after it will strike to this, it will start generating the secondary wavelets like this, है ना। और जब ये यहाँ तक पहुंचा होगा, इसकी हाइट h होगी, तब मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से स्टार्ट होगी, है ना, और फिर इसके बाद इस पॉइंट से स्टार्ट होगी. सो इफ यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट from the upper surface like this, so you will have such kind of figures, है ना. So this is very important concept. So now if you read this statement once again, the wavefront in the second medium, this is first medium, second medium is the tangent to the all secondary wavelets. So these are the secondary wavelets that you have got because of the secondary wavefronts, secondary wavelets generated by striking to the surface. So now it is get reflecting. What it's get reflected, you can see, as we know the laws of refraction very well, it is just exactly following that law and it is moving towards the normal if it is the N1 is lesser than N2, but that is rare, this is denser. So when you move from a rare medium to a denser medium, it means that your ray is going to bend towards the normal. Yes. So and your velocity in this case will be V1 and the velocity in this case will be V2. But here the velocity, because in the rare medium, will be much greater than this velocity V2. Okay? Much not, it will be greater than. Alright. So now if you consider this triangle ABC, this ABC, write this. And then after that ADC, this ADC. Let me tell you the sine I. This is the sine I, angle formation is sine I, and this must also be I. I होगा. Okay. So this angle I is equals to BC divided by AC. This BC divided by this AC. So V1 delta T divided by AC. Similarly, in the triangle ADC, you will have this sine R. Sine R equals to AD divided by this AC. AD divided by this AC. Alright. So now the V2 delta T divided by AC. V2 delta T divided by AC. AD तो आपको समझ आ गया ना? AD जो आपको निकालोगे, that is V2 delta T in the second medium. This is N2 medium. So V2 delta T divided by AC. Sine I divided by sine R equals to V1 divided by V2 is equals to N2 divided by N1. You know very well this by Snell's law, and you have got this formula which shows that this is following the laws of refraction. So that means wave fronts in the wave optics also follows the refraction phenomena. Now we will deal with the very important phenomena in the physics in wave optics, that is interference.
we are now moving towards those topics which are explained by the wave optics but not the ray optics. Clear? When the wave optics, with the help of wave optics, we'll describe the phenomena like interference, diffraction, and polarization after this. Students, now this is Young's double hole experiment. We will talk about our new phenomena that is called interference. But you just take a glimpse of that. So Young's double hole experiment आया 1801 में. The first with the sunlight from a small opening in the roof, just like this. So if you have the roof and the light sunlight is coming from that small part of the roof, so you will see such kind of there is very maxima at the center, and then afterwards there's continuously damping. तो एक इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक टाइप से यहाँ पे एक पैटर्न जनरेट हो रहा है. So this was first demonstrated and first seen with the sunlight from the small opening in the roof, then with the sodium light. और फिर सोडियम लाइट के थ्रू भी देखा गया. The wave, मतलब कि ये इससे क्या समझ आ रहा है? This is, अब यहाँ पे देखिए इस ये तो रीजन जो है शैडो रीजन, सिर्फ लाइट तो यहाँ से आ रही है, लेकिन हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अपने को मिल रहा है. चाहे इसकी इंटेंसिटी कम है इधर की इंटेंसिटी ज्यादा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऑल्दो यू आर गेटिंग सम लाइट ओवर हियर एज वेल. सिंपल सी बात है, यदि लाइट वेव नहीं होती तो वेव ही इधर से उधर पहुंच सकती है, नॉर्मल पार्टिकल तो पहुंच नहीं सकता. यदि मान लीजिए खिड़की है, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए खिड़की है, मैं इधर से पत्थर फेंकूं, मैं इधर से पत्थर फेंकूं तो सीधे जाएगा ना, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा कहीं भी जाएगा. लेकिन अब मैं सोचूं खिड़की के अंदर से इधर चला जाए, खिड़की के अंदर से इधर पहुंच जाए, इधर पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकता ना. मतलब कि यदि यहाँ पार्टिकल आ रहा है तो सिर्फ जैसे जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा. मतलब इसको इधर नहीं पहुंचा सकते आप, इधर नहीं पहुंचा सकते, समझ गया. लेकिन अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से सिर्फ यहाँ से लाइट आ रही है और पहुंच यहाँ भी रहा है यहाँ भी रहा है. तो ये समथिंग इट्स शोइंग वेव काइंड ऑफ नेचर. देखिए, वेव नेचर ऑफ लाइट वाज कन्वेंशनली डेमोंस्ट्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम. ये जो यंग का डबल होल एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ेंगे अभी, है ना, जो उसको मैं अच्छे से मैथमेटिकली आप ज्योमेट्रिकली उसको समझाऊंगा. तो उन्होंने देखा कि ये एक पैटर्न मिल रहा था, है ना. फर्स्ट टाइम द यंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस. जो ये फ्रिंजेस मिल रही थी इधर इस स्क्रीन पे, इसको क्यों मिल रही है, इसको वेव थ्योरी से समझाया गया. किसके द्वारा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट्स कॉल्ड डबल होल एक्सपेरिमेंट. अगेन इन 1802 दे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन रिंग्स बाय द वेव थ्योरी. और फिर 1802 में 1801 से 1802 में क्या किया गया, न्यूट्रॉन रिंग्स फॉर्मेशन को शो किया गया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव थ्योरी. ठीक है, तो लाइट का जो नेचर है डबल होल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझ में आया कि इट हैज अ वेव काइंड ऑफ नेचर. सो वी विल स्टडी दैट यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट इन द फर्दर डिटेल.